All right then. Chalo, let's start with this very easy lesson, very small lesson, very simple lesson, current, electricity and magnetism. Now children, although this lesson is very easy, very small, but still it is very, very important because as I told you all earlier, this topic is the topic that you will study in your 9th standard as well as in your 10th standard. And if at all you take science, then you will study this topic in your 11th as well as 12th. So this is something which is very easy, but it is something which is very, very important. So let's start with current, electricity and magnetism. As the name suggests, this entire lesson is broadly divided into two topics. The first topic is this, current, electricity, and the second topic is this, magnetism. And initially we will only talk about the first topic, that is current, electricity. Okay, so let's start by understanding this term itself, current, electricity. Abhi uske liye na, I want you all to look at this word electricity. Now I'm sure sabko pata hai what is electricity. It is a form of energy. In fact, trust me, electricity is not any form of energy. It is a very, very special form of energy. It is that form of energy without which we cannot imagine our present day lives. हम लोग आज की डेट में अपना लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते without electricity. See, simple. Right now, we all are sitting at our home under the comfort of, fan, under the glow of light. It is all because of electricity. Right now, you're listening to the lecture. It is only because of this form of energy called electricity. Not just, this. There are so many appliances in our house that work on electricity. Chalo, chat box mein. Write the names of some appliances which work on electricity that we have at our homes. Come on, fast. Phone, Wi-Fi, fan, TV, light, mixture, fridge, laptop, AC, computer, washing machine. Excellent, 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 superb. So you can see electricity is so important. And trust me, not just inside the house. अगर हम लोग घर से बाहर निकलेंगे ना, तो भी we will see many many things which work on electricity. चलो, घर के बाहर कौन सी चीजें हैं जो electricity पे काम करती हैं? Come on, right. Street lights, excellent. किसी ने लिखा कार. बेटा कार नहीं, कार रन्स ऑन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी. हाँ, इलेक्ट्रिक कार हो सकता है. लाइट पोल, एक्सेलेंट. ट्रेन्स, वेरी नाइस. मेट्रो, ऑसम. So you can see electricity is used factories. Electricity is used inside the house. Electricity is used outside the house. In short, electricity is used everywhere. So it is very important for us to understand some basic things about electricity, जो हम लोग ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, current, electricity and magnetism. चलो बच्चों, electricity का मतलब तो समझ लिया. Now let us understand this word, current. In fact, I want you all to tell me, what do you mean by this word current? Current का मतलब क्या? Come on, fast. बहुत बार सुना होगा ये वर्ड तुम लोगों ने. What do you mean by current? Otherwise writing present, but okay. ये वाले टर्म में करंट का मतलब क्या है? शॉक. Shock, shock, shock. People are writing shock. Superb. You all are typical Indians. In India, you ask anyone current मतलब क्या? People will say current का मतलब shock. अगर लोगों को शॉक लगता है तो people say current लगा. लेकिन trust me, it is wrong. करंट का मतलब शॉक नहीं होता है. करंट डज नॉट मीन शॉक. Yes, Anshul, excellent. Current is a simple English word and the meaning of this word current is flow. बच्चों याद रखना, current means flow. See, तुम लोगों ने बचपन में ना शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, when water flows you call it as water current. When wind flows you call it as wind current. When news passes from one person to another, when news flows from one person to another, that news is called current news. So याद रखना बच्चों, the word current does not mean shock. Instead, the word current means flow. But obviously, in this lesson, we will not study about water current, wind current or current news. We will talk about a very special type of current, and that current is called as electric current. अच्छा, करंट का मतलब फ्लो है, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? सिंपल, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. याद रखना बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. आई एम श्योर यू ऑल नो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज.
Electric current is the flow of this electric charge. Now talking about electric charge, students, if I want to study about charges, then there are two ways of studying. I can either study about charges when they are at rest, or I can study about charges when they are in motion. So I can study about charges when they either are at rest. At rest का मतलब they are not moving, they are stationary. Or I can study about these charges when they are in motion. Motion का मतलब they are moving. See, I will give you example दोनों का, तुम लोग को automatically समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ. First, let me give you an example of charges at rest. अभी ये भी तुम लोगों ने बचपन में ना पढ़ा है. Imagine करो, I have a glass rod, I have a silk cloth. I take this glass rod and I start rubbing it against the silk cloth. Now, after I rub the glass rod against the silk cloth, it is seen that glass rod develops positive charge and silk cloth develops negative charge. जैसे ही मैंने glass rod को silk cloth पे rub किया ना, वैसी थोड़ी देर के बाद मैं देखूंगा ना तो अपने आप glass rod पे positive charge आ जाता है और silk cloth पे अपने आप negative charge आ जाता है. But importantly, after these charges are developed, एक बार ये charges आ गए ना, उसके बाद these charges remain wherever they are. These charges do not move. In other words, these charges are at rest. And this type of electricity is called as static electricity. Remember, students, the word static means at rest. Now here, because the charges are at rest, this type of electricity that you all have studied in your lower standards is called as static electricity. So whenever the charges are at rest, that type of electricity is called as static electricity. On the other hand, whenever the charges are in motion, that type of electricity is called as current electricity. मैंने बोला था ना, the word current means flow. Obviously flow का मतलब होता है motion, and that's why that type of electricity is called as current electricity. Acha, I'm getting some doubts. What I suggest is let me finish the topic and last 5 minutes we will solve all the doubts. तो अभी तुम लोग सिर्फ सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ. कुछ डाउट आएगा तो नोट करके रखना, मैं तुम लोग को लास्ट में चांस दूंगा पूछने के लिए. एंड आई प्रॉमिस यू सबका डाउट सॉल्व होने के बाद ही मैं लेक्चर खत्म करूंगा. ऑलराइट, बट अभी ध्यान दो बिकॉज आई डू नॉट वांट यू ऑल टू डिस्ट्रैक्ट. So there are two types of electricity, students: static electricity and current electricity. What is static electricity? It is the electricity produced when charges are at rest. What is current electricity? It is the electricity produced when the charges are in motion. अपने वायर में से करंट फ्लो होता है, अपने घर पे जो वायर्स होता है उसमें से, राइट? करंट फ्लो होता है मतलब क्या? चार्जेस आर एट रेस्ट और चार्जेस आर मूविंग. डेफिनेटली दे आर मूविंग. एंड दैट्स व्हाई घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है वो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. एंड दैट्स व्हाई, बिकॉज घर पे हम लोग ज्यादातर करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ये वाले लेसन में भी ज्यादा से ज्यादा हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे. हाँ, तुम लोग को याद ये रखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज: स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. चलो, आई एम आस्किंग क्वेश्चन. कम ऑन, राइट इन द चैट. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कब होता है? व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट और चार्जेस आर इन मोशन. कम ऑन, राइट फास्ट. व्हेन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड? सुपर, वेरी गुड. तो सबका ध्यान है, व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट. एंड व्हाट अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, माय डियर स्टूडेंट्स? Come on, current electricity. Yes, awesome. When charges are in motion. डिटेल में हम लोग कौन सा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं? स्टैटिक और करंट? सुपर्ब. करंट. Excellent. So in detail we will talk about current electricity. ठीक है? चलो, now stop writing and again pay attention. You know, the problem with current electricity is, मैंने बोला charges are in motion. But not all substances allow charges to flow. There are some substances in nature जिसमें से current pass हो सकता है, but there are some substances in nature जिसमें से current pass नहीं हो सकता है. So depending on this, I can divide the substances into two types. There are two different types of substances. The first type of substances is called conductors, and the second type of substances is called as insulators. बच्चों याद रखना, there are two types of substances: conductors and insulators.
I'm sure तुम लोग ने पढ़ा होगा about good conductors of electricity and bad conductors of electricity. Good conductors are called as conductors. Bad conductors are called as insulators. तो चलो, I want you all to now write in chat box. Good conductors के बारे में तुम लोग को क्या पता है? Do they allow current to pass or do they not allow current to pass? Come on, write. Awesome. So smart बच्चे लोग हैं यार सब. They allow current to pass. Very good. So look at the definition of conductors, everybody. Substances through which electricity can flow are called conductors. Chalo, everybody, I am giving you only 30 seconds of time. By heart this definition. Jaldi, jaldi, jaldi. Is it done? Sure. Chalo now. Raise your hands. Who wants to answer? कौन आंसर देगा ये? Come on, come on, come on. I want maximum hands to go up. All right, chalo. Kevin Solanki. Are you there, Yes, sir. Kevin? Beta bolo what are conductors and don't cheat, huh? Yes, substances through which electricity can pass is known as conductors. Superb. So can you frame the definition of insulators, Kevin? Kevin? I think Kevin slept. Hello. हाँ Kevin, you're awake. Yes. बेटा फ्रेम कर सकते हो क्या इंसुलेटर्स का डेफिनेशन? Yes, sir. बोलो. Substance through which electricity do not flow is known as insulators. Superb. See, it is so easy. Very good, Kevin. Excellent. चलो, mute yourself. Insulators का मतलब substances through which electricity cannot flow are called insulators. चलो अभी चैट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है? गुड कंडक्टर्स कौन होता है? मेटल्स होता है कि नॉन मेटल्स होता है? Okay. Superb, superb, excellent, my smart students. Very good. So everybody gave me the same answer, metals, and that's right. Conductors are mostly metals. There are some exceptions, but अभी हम लोग को वो exceptions पढ़ना नहीं है. हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे conductors are mostly metals. तो चलो example लिख के बताओ मेरे को chats में. Come on, fast. Copper, iron, superb, or silver, very nice. Aluminium, gold, zinc, awesome. So examples, मेरे को इतना सब examples लिखने का जरूरत नहीं है, तो I'll be writing only 3 examples, and the 3 examples are copper, silver, iron, etc. You can write any 3 metals. अच्छा, if conductors are mostly metals, then obviously insulators will be mostly non-metals. चलो फटाफट chat box में non-metals का example लिख के दो मेरे को. Superb. Ved, rubber, excellent. Plastic, wood, superb. Glass, paper, nice. So examples are glass, rubber, wood, etc. तो बच्चों यहाँ पे ना हम लोगों ने एक डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पढ़ लिया. अगर एग्जाम में आया डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो हमको पता है फर्स्ट पॉइंट क्या लिखने का. Substances through which electricity can flow are called conductors, and substances through which electricity cannot flow are called insulators. Second point क्या लिखने का? Conductors are mostly metals, insulators are mostly non-metals. And then we need to write examples: copper, silver, iron, etc. And here in insulators we will write glass, rubber, wood, etc. चलो, I am giving you 1 minute. पूरा आंसर हमको बाय आउट करना है. Come on, fast. वाह, अभी से ही रेज हैंड्स आ गए. ऑसम.
आई होप जितना अच्छे से तुम लोग अभी आंसर कर रहे हो उतने ही अच्छे से स्कूल में भी आंसर लिखते हो, यहाँ के भी टेस्ट में उतने ही अच्छे से आंसर लिखते हो। ओके, तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ लिया होगा, राइट? सो वी विल ask Hitesh. Hitesh from Vile Parle, can you hear me, Hitesh? Hitesh, are you there? Hmm. Yes, sir. Hitesh, आवाज आ रहा है? Yes, sir. Come on, start. Distinguish between conductors and insulators. Substances through which electricity can flow are called conductors. Correct. Conductors are mostly metals, example copper, iron, silver, and insulators. Substances through which electricity cannot flow are called insulators. Insulators are mostly non-metals, and examples wood, rubber, and glass. Very good, excellent. So I hope people are clear with what are conductors, what are insulators, और दोनों में फर्क क्या है. चलो, now I'm going to show you two pictures. All right, I want you to look at those two pictures. After looking at those two pictures, I want you all to think, and after thinking, you will write and you will answer. कौन सा पिक्चर कंडक्टर का है, कौन सा पिक्चर इंसुलेटर का है. I've already told you all, I will not solve your doubts in between the lecture. I will solve all your doubts at the end. Okay, so let's start. Picture 1, picture 2. चलो chat box में लिख के दो. This is picture 1, this is picture 2. कौन सा कंडक्टर, कौन सा इंसुलेटर है? Fast. Come on, come on, come on, everybody. Which one is conductor? Which one is insulator? Okay, people are writing first pick is conductor, second insulator. First conductor, first picture conductor, second insulator, first picture conductor. सब लोग सेम आंसर लिख रहे हैं. Somebody named Yash Darira is very nuisance. So I am removing him from the lecture. Don't mind Yash. Better luck next time. Yes. So first picture is conductor, second picture is insulation, as per most of y'all. And let me tell you, your answer is wrong. Yes, your answer is wrong. Ayushi from DN Nagar is saying first picture is of insulator, second is conductor. मतलब उल्टा बोल रहे हो अभी सब लोग. यार तुम लोग सब पॉलिटिशियंस हो, एक मिनट में पार्टी चेंज. ईशान फ्रॉम जेबी नगर इज सेइंग बोथ आर कंडक्टर्स. मां कसम, मैं तुम लोग को बोलूं, तुम लोग के सारे आंसर्स रॉन्ग है. और अभी ध्यान से सुनो करेक्ट आंसर क्या है. नहीं रे बाबा, डीएन बोथ आर इंसुलेटर भी रॉन्ग है. सुनो ना, द करेक्ट आंसर इज दोनों में दोनों है. दोनों में कंडक्टर्स भी दिखेंगे तुम लोग को, दोनों में इंसुलेटर्स भी दिखेंगे. अच्छे से देखो. ऑब्वियसली ये तो समझ में आ गया रहेगा. दिस इज अ वायर. सी, वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड बाहर से इट हैज गॉट अ प्लास्टिक कवरिंग. सो दिस कॉपर का पार्ट जो है ना, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज कॉपर, इट इज कंडक्टर. और ये जो प्लास्टिक का कवरिंग है ना, दिस इज एन इंसुलेटर. ये जो प्लग है उसका जो पिन्स है, दे आर मेड अप ऑफ मेटल, सो दे आर कंडक्टर्स. पर ये जो प्लास्टिक का जो कैप है ना, जिसको हम लोग पकड़ते हैं, दैट कैप इज एन इंसुलेटर. तो याद रखना बच्चों, दोनों में दोनों है. एंड दिस इज वेयर योर ऑब्जर्वेशन कम्स इनटू पिक्चर. आई वांट यू टू हैव वेरी शार्प ऑब्जर्वेशन इफ यू वांट टू मास्टर दिस सब्जेक्ट फिजिक्स. ठीक है? ओके, चलो. एनीवेज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. अब ये लास्ट टॉपिक जो है ना बच्चों, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट का टॉपिक है. So I want you all to pay double attention. I want complete seriousness.
and I do not want anyone to chat or write anything in the chat box. फिलहाल मैं जो पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से ध्यान दो, बिकॉज अगर ये टॉपिक समझेगा तो ही तुमको नेक्स्ट लेक्चर समझेगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर भी नहीं समझेगा. See, we started this lecture by saying that electric current is the flow of electric charge. बराबर. Now बड़ा क्वेश्चन ये है कि why do charges flow? देखो चार्जेस ऐसे ही तो फ्लो नहीं होगा, कुछ तो रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं. Let us understand what that reason is. What we are learning is this: what makes the charge flow. बच्चों अभी ये समझने के लिए ना, I will first give you two examples. पहले अच्छे से ये दोनों एग्जाम्पल समझ लो, तो अपने आप तुम लोग को ये एक्चुअल रीजन समझ में आ जाएगा. Let's start with example number 1. Suppose I have a beaker. Suppose I have one more beaker. The first beaker, I'll call it as beaker A, and the second beaker will be beaker B. I want you to look at both the beakers A and B, and chat box में अभी मुझे आंसर लिख के दो, दोनों में क्या फर्क दिख रहा है तुम लोग को. And don't give me a stupid answer, sir, इसके राइट साइड में होल है, इसके लेफ्ट साइड में होल है. वो रीजन नहीं चाहिए. What difference can you find in beaker A and beaker B? अरे हितेश, both have holes. I am asking about difference. दोनों में फर्क क्या है? Come on, देख के ही मालूम पड़ेगा guys. It is not so difficult. Ah, very good. A is up and B is down. या तो थोड़ा सा अगर मैं scientific terms में बोलूं तो beaker A is at a higher level and beaker B is at a lower level. याद रखना बच्चों, beaker A is at a higher level and beaker B is at a lower level. What I do is I join both the beakers with the help of a pipe, and this pipe has a stopcock. या तो in simple words अगर मैं बोलूं तो this stopcock is nothing but a tap. So this pipe has a tap. I fill water in beaker A, then I fill water in beaker B. Initially the tap is closed. बच्चों वापस से चैट बॉक्स में आंसर देना. If the tap is closed, what do you feel? Will water flow? Yes or no? सिर्फ इतना लिखो. अगर टैप बंद है तो will water flow? Common sense, very logical. Water will not flow. Very good, all of you. अभी सुनो. What I do is I open the tap. Tell me when I open the tap. Now obviously water will flow. तुम लोग को मुझे बताना है water will flow from A to B or B to A. Come on. Water will flow from. Very good. सबका आंसर करेक्ट है. Water will flow from A to B. Now I want the reason why A to B. Okay, superb. Again, सबका आंसर राइट है because beaker A is at a higher level, beaker B is at a lower level, and that's why water starts flowing from beaker A to beaker B. इसका मतलब क्या है मालूम है बच्चों? That means water always flows from higher level to lower level. हमेशा अगर तुम लोग देखोगे ना, water will flow from higher level to lower level. Waterfalls, सबने देखा है waterfalls. Water flows from higher level to lower level. But किसी ने water up देखा है क्या? No, because water up कभी exist ही नहीं होता है, because water cannot flow from lower to higher. So remember, always water flows from higher level to lower level. चलो, I'll give you one more example. Suppose there are two objects A and B. A का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, B का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस. तो कॉमन सेंस, बीकर A, ऑब्जेक्ट A इज वेरी हॉट एंड ऑब्जेक्ट B इज कोल्ड. अब मैं क्या करता हूं, दोनों ऑब्जेक्ट को है ना एक दूसरे से टच करता हूं. If I bring both the objects in contact, so definitely heat will flow. Now you have to write and tell me heat will flow from A to B or B to A. Come on, heat कहां से कहां फ्लो होगा? Okay, very good. Again, everybody is giving me the correct answer. Heat flows from A to B. Why? Because heat also flows from higher temperature to lower temperature. अभी बच्चों स्टॉप राइटिंग, ध्यान दो. अभी मैं क्या बोलने वाला हूं. सी, हम लोगों ने ये दो एग्जाम्पल में क्या देखा? हम लोगों ने देखा दैट वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर,
इसका मतलब ये है कि नेचर में एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। नेचर में सब कुछ हायर से लोअर ही फ्लो होता है। तो बच्चों अगर मैं बोल रहा हूं चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई, आई मीन चार्जेस आल्सो फ्लो, तो डोंट यू थिंक इट शुड आल्सो फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल? बराबर, नेचर में सब कुछ हायर से लोअर ही फ्लो होता है, तो चार्ज को भी कहां से कहां फ्लो होना चाहिए? हायर टू लोअर। In the world of electricity, higher and lower is produced by a device जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। I repeat, मैंने क्या बोला? मैंने बोला in the world of electricity, higher and lower is always produced by a device which is called as cell. Just a second, हाँ बच्चों। There are some unwanted people in the lecture, so let me set things in order, right? And just give me a minute, हाँ बच्चों। ठीक है, चलो। Now nobody will be able to join the meeting now. Okay, so I was talking about in nature everything flows from higher level to lower level. So charges should also flow from higher level to lower level. And in the world of electricity, higher and lower is produced by a device जिसको हम लोग बोलते हैं cell. Now you might wonder what is a cell. सबने तुम लोगों ने Duracell देखा होगा, right? That simple battery is called as a cell. Now हर बार तो मैं सेल का एक्चुअल डायग्राम नहीं बना सकता हूं, तो what I will do is I will use the symbol of a cell, and the symbol of a cell is this: one big line and one small line. बच्चों याद रखना, anywhere any book you see such a thing, इसका मतलब है सेल। अच्छा, इसका मीनिंग भी है। दिस बिगर लाइन स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव टर्मिनल। I repeat students, bigger line stands for positive terminal and smaller line stands for negative terminal. याद रखना बच्चों, ये तुम लोग को बहुत काम आने वाला है। Bigger line stands for positive terminal and smaller line stands for negative terminal. I am sure everybody has heard of Chhatrapati Shivaji Terminus. Everybody has heard of Bandra Terminus. टर्मिनस का मतलब होता है एंड। सो पॉजिटिव टर्मिनल इज दैट एंड which has positive charges and negative terminal is that end which has negative charges. तो इन सिंपल वर्ड्स याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। एंड नेगेटिव टर्मिनल के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। Now I'll ask you one simple question. Come on, chat box में मुझे आंसर लिख के दो। Suppose the charge on positive terminal is 1. Suppose the charge on positive terminal is 1 and suppose the charge on negative terminal is also 1. लेकिन बच्चों याद रखो, मैंने यहाँ पे +1 और -1 लिखा है। Why? Because this is a positive charge and this is a negative charge. So students, tell me mathematically which one is greater, +1 or -1? Come on, fast. Which one is greater, +1 or -1? Okay, superb, superb, excellent. +1 is greater. So that means positive terminal is at a higher level and negative terminal is at a lower level. याद रखना बच्चों, positive terminal is considered to be at a higher level, negative terminal is considered to be at a lower level. But you know what? In the world of electricity, हम लोग ये वर्ड जो है ना लेवल वो यूज नहीं करते, हम लोग को थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज करना पड़ता है। Remember, level in the world of electricity is also called as potential. याद रखना, level is also called as potential. तो अगर मैं बोल रहा हूं positive terminal is at a higher level, मतलब positive terminal is at a higher electric potential. Potential का मतलब होता है level, same. अगर मैं बोल रहा हूं negative terminal is at a lower level, मतलब negative terminal is at a lower electric potential. So remember students, positive terminal is at a higher potential, negative terminal is at a lower potential. क्या लगता है students, if one potential is higher and other potential is lower, so should I say both the potentials are same? No, right? Both the potentials are not same.
एक हायर है एक लोअर है, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस. I repeat, the difference between the higher potential and lower potential is called as potential difference. अब मैं क्या चाहता हूं बच्चों, I want you to connect all these three examples. यहां पे तुम लोग के हिसाब से पानी क्यों फ्लो हुआ? तुम लोगों ने बोला A ऊपर है B नीचे है, इसके लिए पानी ऊपर से नीचे फ्लो हुआ, बराबर. मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि पानी फ्लो हुआ बिकॉज देयर वाज अ हाइट डिफरेंस बिटवीन देम. यहां पे हीट क्यों फ्लो हुआ? बिकॉज देयर वाज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम. तो यहां पे चार्जेस क्यों फ्लो होंगे? बिकॉज देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम. तो याद रखना बच्चों, चार्ज ओनली फ्लोज बिकॉज ऑफ वन रीजन, एंड दैट रीजन इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, कौन सा डिवाइस यूज करने से हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिला? डेफिनेटली सेल. तो हु क्रिएटेड पोटेंशियल डिफरेंस? इट वाज क्रिएटेड बाय सेल. So henceforth, remember in this lecture, in this lesson, in fact, whenever you come across this big line, small line on the screen, जब भी तुम लोग को पीपीटी पे ये दिखेगा ना बड़ा लाइन और छोटा लाइन, तो मैं तुम लोग को दो क्वेश्चन पूछूंगा. फर्स्ट, व्हाट इज दिस? तो तुम लोग को बोलने का सेल. और मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा सेल का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सेल? तो तुम लोग का आंसर होना चाहिए ये, सेल का काम है टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस. I hope this was clear to you all. Cell का काम है to create potential difference. We will just have a quick recap and then we will go for doubt solving. We started with this lesson called current, electricity and magnetism. हम लोगों ने पढ़ा था that electric current is the flow of electric charge. Then we spoke about two types of electricities. Come on chat box में लिख के बताओ कौन सा है दो टाइप का electricity, फटाफट जल्दी. Which are the two types of electricities? Excellent. Superb. Static electricity and current electricity. Static electricity is the electricity produced when the charges are at rest. Current electricity is the